Standing here at the Band Road, this essentially is on the other side of the Yamuna. If you remember, Kalandi Kunj is one of those areas. It's a border point where traffic between Delhi and Noida, takes through during the day. Lakhs and lakhs of cars, cross that particular border point. But there are a lot of people here who are living in the low-lying areas. With the torrential rain, about 40 years this record has been broken in Delhi NCR. 41 years of record, 153 mm rainfall in the national capital. Already the month of July's rainfall has been done over with. And the monsoon, they say, was weak in the beginning, but life has completely been thrown out of gear. You can see behind me, people have come up with all of their, household items, from the gas stoves to pretty much every article that they own. The beds, the whatever ration they had with them, from stools, each and every article that they have, they've pretty much put that on top of their heads, just like this lady over here. And now they're bringing utensils, they're bringing their daily, essentials and needs over here. Why have they come here is because at about evening time, the word that's revolving around is that the water from the Yamuna is going to come up to a dangerous level, which is why the people here are scared. Let's talk to them. Let's understand, why they've come here. Amma, जल्दी से बता दीजिए बस ये कि आप सारा सामान मैं देख रहा हूँ सर पे ढो के यहाँ तक ला रही हैं. कुछ लोग कह रहे हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं डरने की बहुत जरूरत है. आप क्यों आ गए? पानी आ जाएगा यहाँ पे. पानी आ जाएगा तो आपको घबराहट है पानी की वजह से? पानी का डर है. तो आप इतना सारा सामान लेकर आई हैं, कुछ सहायता मिली गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ सिर पे रख के लाए, सिर पे रख के लाए, कुछ नहीं मिली. सिर पे रख के लाए हैं, लेकिन अब आगे इसके बाद कहाँ जाएंगे ये सब सामान लेके? हाँ? तो अभी कहाँ? अभी ये सामान यहाँ पे लाके रख दिया, अब इसके बाद क्या करिएगा? अभी यहीं पे रहेंगे? किसी से आपने गुहार करी है, किसी से कुछ मांग करने की कोशिश करी कि आपकी मदद कर दी जाए? आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं आप यहाँ पे. तो आप उधर पानी के पास हैं, आपको घबराहट हुई इसलिए आप यहाँ पर? काम भी बंद होगा, अब सब काम बंद हो जाएगा. काम भी बंद है? काम भी बंद है. और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, इनको सब ऐसे लेके आप यहाँ बाहर रहेंगे. अभी वो भी कह रहे हैं, मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि बारिश होने की भी आशंका पूरी है. बारिश भी आ रही है बहुत तेजी से, सामान भीगता रहेगा. तो घबराहट नहीं हो रही, डर नहीं लग रहा किसी बात का? डर है जी, पूरा डर है. जमुना खींच लेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे. बच्चे छोटे बच्चे कहाँ ले जाएंगे जब खींच के नलाते सौदा था. Well, certainly. So the people here saying that, they're scared. What will happen, what will not happen is a different story altogether. Right now they're scared. There is no help from the government per se, no help from the authorities. They've had to put all of this, stuff onto their heads and bring it here to a little higher, place, so that at least for the time being, they're safe. Some more people also with us. Let's, speak to them as well. भैया अपना नाम भी बता दीजिए. जी, मेरा नाम नवीन चौहान है. हाँ. और मैं यहीं का मूल निवासी हूँ. जी. 78 के बाद यहाँ पे ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं आई है. किसी भी तरह की खतरे की कोई बात नहीं है. लोगों को हम पहले आगाह कर चुके हैं कि आप अपना सामान निकाल लीजिए. बाकी खतरे की कोई बात नहीं है. ना तो इनके रहने के लिए कोई समस्या है, ना ही इनके खाने के लिए कोई समस्या है. सब हम अपनी तरफ से मैनेज करेंगे इनके. तो आप कह रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन डर का क्या किया जाए? इंसान को देखिए, इंसान डर लगता है, बिल्कुल लगता है. डर सच्चा होता है. डर लगा तभी ये यहाँ पर आ चुके हैं. ठीक है जी. Also show the viewers, where they've come from. They've traveled all the way from here, from down below. Over there, far in the area, you can see. I'm going to request the camera person to go a little ahead and showcase. You can see that essentially, the Yamuna, which is in Spate, it's right there on the edges, and these are some low-lying areas that people have, traveled up from. And this is this position right now. With all their stuff and all their luggage, they're here. Some people are scared. They don't know what next to do. They've got little kids with them. Look at that guy again. He's getting some more stuff. A little boy over there. He's getting more stuff. But at the same time, there are other people who are saying that this is in fact helping the situation. There is no irrigation facility here, but right now you've got all this green land that will get some sort of water because of the dangerous level of the Yamuna. On the other hand, there's a gentleman over here who says since 1978 there has been no serious concern with regards to the level of Yamuna. But this entire road, it has been blocked. All traffic has been shifted on the other side of the road, and that's specifically because all these people are coming up. We'll show you some more people towards the end over there as well.
ये बाढ़ का पानी आ रहा है। So, well, ladies and gentlemen, you can see we've traversed a little bit inside from the main road up there. We've probably walked, let's say, some 500 meters towards the inside, and you can already see this water right here. This is not some flood. This is River Yamuna. This is the Yamuna that is now inside here. There are so many crops here. You can see the entire farmland has taken a massive damage. You probably can't see the water here because it's already soaked into the soil. But there's so much of vegetation here, which the people here are telling us that it has gone rot. It's gone bad. There's no, dividends that they're going to be getting from this particular crop. This right here is a house that you can see, and the people here, their perils. We're going to speak to them as well. भाई साहब ये बताइए सबसे पहले तो कि ये कितनी दूर यमुना एक्चुअली कितनी दूर है यहाँ से जो अब यहाँ बहता चल रही है, यहाँ से कितनी दूर है यमुना? अभी यमुना जो पहले बहती थी बाढ़ आने से पहले लगभग 1 किलोमीटर दूर थी और अभी ये बाढ़ के कारण पानी यहाँ तक आ चुका है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। Yamuna actually the river is 1 kilometer away and it's already traveled a kilometer within 24 घंटे 48 घंटे की बात है। 48 सुबह 12 घंटे की बात है। ये सुबह 12 घंटे सुबह 12 घंटे सुबह से बढ़ गई है। आप मुझे बताइए सर कि यहाँ पे ये खेती हो रही है, इसमें किस तरीके का नुकसान हुआ लोगों को? हमने जो है जी प्योद लगाई थी गोभी की 50,000 रुपए किलो का रेट है, बीज है हाँ जी। 50,000 रुपये पर किलोग्राम इज द रेट ऑफ द सीड। फसल देखो आप, पानी भर चुका है उसमें प्योद में वो पानी, ये पूरा अब आप देख रहे हो यहाँ पे पानी, इससे हमारा खर्चा चलता। अब वो जमा भी देनी है, हमें जमा कहाँ से देंगे हम बताओ आप? देखो पानी जमा जाती है 10,000 रुपए बीघा की साल की। 9 बीघे है 90,000 रुपए साल के जाते हैं। लाख भर हो गया मतलब। हाँ, और इसमें 50,000 की नुकसान हो गया है। पौध जी डाली, पौध मंजगी भी तोरी पूरी है, ये सब डूब जाए। अब बताओ ये तोड़ते हम जब खाना पीना होगा तो ये बेकार हो गई है फसल। ये देखो आपके आगे खराब हो आपके जाएगा, पास पानी है, आज रात पानी रहेगा नहीं खराब हो जाएगा। Well, that's the situation here. I mean, we've been standing here for the last 2 minutes or so, and the water is constantly rising. It's constantly rising. देख रहे हैं किस तरीके से पानी आगे बढ़ रहा है। कब तक जहाँ पे हम पहले खड़े होकर बात कर रहे थे, वहाँ तक पानी को पहुँचने में या उसके पास पानी को पहुँचने में मान लीजिए और कितना टाइम लगेगा? ज्यादा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? 1 घंटा लगेगा। तो उसमें बताइए, अब ये लोग हैं यहाँ पे, अम्मा से ही बात कर लेते हैं। अम्मा, आपको डर नहीं लग रहा है? सब कह रहे हैं 1 घंटे में पानी वहाँ तक चला जाएगा, कुछ घबराने की बात नहीं हो रही? डर नहीं लग रहा? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, घर खाली करने की सामान लेकिन निकल रहे हैं आप लोग? निकाल रहे हैं सामान, निकाल रहे हैं, वो कुछ निकाल लाओ। तो ये भी अब यहाँ से जा रहे हैं भाई साहब। तो मतलब ये है कि खौफ तो है लोगों में, डर तो है पूरी तरीके से। 1-2 ट्रॉली तो सर सामान निकाल लिया है अभी, और बाकी निकाल रहे हैं अभी। ये देखो वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी आप लोग आए थे तो यहाँ तक पानी था, 10 फुट। Within seconds, the water is constantly progressing towards the higher ups. All the low-lying areas, I can already imagine, it's all gone. It's all done and dusted. I'm going to request the camera person to please just zoom in on where the Yamuna is actually coming from and understand the perils of the people. They're already planning on booking a trolley and taking their stuff out. तो अब खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे अम्मा? अब आगे आने वाले दिन में किस तरीके का आपको घबराहट नहीं हो रही कि कैसे गुजरेंगे अगले कुछ दिन, अगले कुछ घंटे? कुछ तो प्लान की होंगी, कुछ तो प्लानिंग की होंगी। कुछ है ही नहीं। ये सोचा घबराहट की बात है, पानी में राशन लेंगे अपना, हम अपने को बचाने को देखा, राशन को देखा, आप ही बताओ। पहले राशन को देखा, अपनी जान बचावा, उसे देखा। भूखे रह जाएंगे पर कम से कम छोटे बच्चे, इनका क्या होएगा? आप बताओ, इस वजह से बाहर जा रहे हैं हम। तो यहाँ के जो भी आपके विधायक हैं, जो भी जिस तरीके की अथॉरिटी है यहाँ पे, कोई इंस्पेक्शन करने कोई देखने तक तो आया नहीं है। वो क्या वो करेंगे? देखने तक आया आपके पास? यहाँ में कोई देखने नहीं आया, मर रहे हैं जी रहे। खाली विधायक जी और बस वोट के टाइम पे आ जाना, वोट डाल देना, हम तुम्हारे साथ हैं भाई बंदो, बस इतना बोल देते हैं। Well, so the picture is absolutely clear cut. I'm just going to roll my trousers up because even as we're talking, the water level is constantly rising up, and that's the peril of the perils of the people over here, because the crop is gone. They paid their mortgage for the land. It's about 50,000 rupees per kilo for seeding, and the season is just right. I mean, it's monsoon right now, and this torrential rain has really taken a toll on people's lives, the livelihoods. Look at that little boy over there. I mean,
little does he know what's coming his way. This house that he's been living in for the longest time, what's going to happen to this house within seconds. I mean, we were right here. The road has completely been inundated. We're going to go up again, try and speak to some other people, but that's the ground reality. The authorities, the politicians, they seem to be coming here only for votes, but when you actually need them, well, गायब है सब. कोई देखने नहीं आया सर. Well, that's the bottom line and the sad reality. We're going to constantly bring you more voices and updates, but the situation right now certainly looks grim. We traveled just a little bit ahead again, and we saw a little better looking tent, a little bit of a better arrangement. There's this lady. It's also started raining. The weather is, turning the tide now. It was sunny throughout the day, and now we're looking for the Yamuna that is going to breach that 45-year-old record. Is the breach, that particular mark has been breached by the river. Some people here, let's talk to them very quickly. अम्मा देखिए बरसात भी होने वाली है. मैं देख रहा हूँ कई लोगों के पास ये टेंट भी नहीं, आपके पास ये टेंट है. चलिए, इस टेंट का कहाँ से जुगाड़ किए हैं, नीचे से कितनी दूर से सामान लेकर आए हैं, किस तरीके का डर लग रहा है, बताइए कुछ. नीचे से ला रहे हैं, कभी पहाड़ में से हाँ, पानी आ गया. अच्छा, और ये गाय भी आप लोग ही हैं, इनका देखभाल भी करना है. देखभाल भी करना है. तो अब प्लान क्या है आगे का, क्या प्लान किए हैं? अम्मा बता रही थी आप गए कुछ कमरा उमरा ढूंढने गए थे अंदर. आए थे. हाँ, तो मैं कह रहा है यहाँ से गाय ले जाओ कोई कमरे में. जैसे कि कोई आ जाए तुरंत बोल के ले जाए. बोले कि ले जाओ चोर इसलिए तासे नहीं सही बात है, गायब और क्या, गाय की चोरी हो जाएगी. इतना ये सब सामान आप अपना लेकर आए हैं. The problems seem to be similar. They don't know what's going to happen next. They have their cattle with them. They have their, their articles, their essential household, commodities. How are people going to, spend the night is becoming a question. It's already started raining, and they have a little, tent sort of a structure that they've done themselves. It's a do-it-yourself sort of a situation. But what about this cattle? Where are they going to keep the cattle? Will the authorities allow them to keep the cattle right here on the road? And just like this family we showed you there, the family that was over there, people who are still living in the low-lying areas, still trying to manage how they're going to bring their, articles on top of their head to the mainstream, to the main. And just like this, you've got many people who are now coming up from those low-lying areas, because let's not forget, ladies and gentlemen, the river Yamuna has breached that 45-year-old record. It's now in Spate. What's going to happen in the next couple of hours is anybody's guess. We can only hope that good sense prevails, and these people who are now having to fend for themselves, quite literally, get some sort of help from the authorities.